हेलो एवरीवन। आई रियली होप मेरी आवाज जा रही हो आपके पास। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाय एसआर, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? Actually, there was now some technical issue at our end. Sorry. Okay. So hello everyone, good evening. कैसे हैं आप सब लोग? There was some technical issues at our end, so it took around 2-3 minutes of delay, but rest assured we are back. So today is day 15 of this particular program, Nikaalo Prelims 23, and today we will be discussing bilateral relations. ठीक है, इंडिया के जो bilateral relations हैं जो न्यूज में रहे हैं, we will be taking care of those things. And जो आज का टेस्ट है, which is available on menti.com, you can use the code 39435268, right? So you go on the menti.com, use this code 39435268. अगर आप आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा सॉरी, कि हम ये तो लाइव चलता ही चलता है और बैक में हम लोग का menti.com पे टेस्ट भी चल रहा होता है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर कंडक्ट करा रहे होते हैं. सो आज का शेड्यूल आप देख लो. बायलैटरल रिलेशंस, कल हम लोग बात करेंगे ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डेवलपमेंट्स एंड मैप बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें मैं ज्यादा प्रायोरिटी पर रखूंगा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डेवलपमेंट्स को और मैप बेस्ड क्वेश्चंस को, बिकॉज ये बहुत अच्छा खासा बल्कि क्वेश्चंस आते हैं इससे एंड बहुत ही इजी स्कोरिंग है. अगर आपका थोड़ा सा भी करंट अफेयर्स स्ट्रांग है, आप इसको हलवे की तरह निकाल सकते हो. एंड फिर हम परसों और नरसों इसको जो बजट है, इकोनॉमी सर्वे है एंड इंडिया यूरोप के जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उनको कवर करेंगे, राइट? सो इस हफ्ते मैंने कल भी बताया था, इस हफ्ते जो हमारा कवरेज होगा इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन जो 2023 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं. प्लस यहां से आप अराउंड 8 से 9 सवाल आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट? सो जो भी ये हमारे साथ यहाँ जुड़ते हैं, लाइव जुड़ते हैं या बाद में देखते हैं, ठीक है, उनके लिए हमें बताना चाहता है कि हम लोग ने आप लोग के लिए बहुत ही छोटे, बहुत ही प्रिसाइज एंड बहुत ही एफिशिएंट माइक्रो नोट्स तैयार कर रखे हैं, राइट? वो आप अपने प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हो. आपको करना क्या है, आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक है उस पर जाकर रजिस्टर करना है एंड बस आपको पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है? सो इसके लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है. आपकी प्रिपरेशन में हम लोग की टीम की तरफ से छोटा सा योगदान है. सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 1 वार्म अप कर लो. 16 प्लेस. चलो, so the question is, recently launched Sustainable Development Initiative for the Northeastern Region of India is a joint initiative of India and which other nation? Australia, United States of America, South Korea या फिर जापान? So जो हमारा Sustainable Development Initiative for the Northeastern Region of India है, ये हमारा किसके साथ है? टाई अप के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, यूएसए के साथ है, साउथ कोरिया के साथ है कि जापान के साथ है? यू आंसर दिस. हाय चेतना, गुड इवनिंग. ओके, सो आज काफी स्लो चल रहा है, इसलिए मैंने आपके लोगों के लिए 35 सेकंड रखे थे, ना कि 30 सेकंड. एवरीवन हैज वोटेड. देखते जापान कितने लोगों ने किया है. जापान 10 लोगों ने किया, बट जिन जिन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ कोरिया किया है 6 लोग. प्लीज वापस जाके इस न्यूज को पढ़ो, ठीक है? ये आपका नॉलेज गैप है बेसिकली. अगर आप इसको गलत कर रहे हो तो आपका नॉलेज गैप है. बाकी 10 लोग जिन्होंने सही किया है दे आर फाइन. अब इसका थोड़ा डिटेल देख लो. India and Japan have launched the India-Japan Initiative for Sustainable Development of the Northeastern Region of India for cooperation in area समझ लो, healthcare, forest resources management, connectivity and tourism. ये बेसिकली 4 चीजों पर फोकस कर रहा है. एक तो आपका हेल्थ केयर है, दूसरा फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट है, तीसरा कनेक्टिविटी एंड टूरिज्म इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. तो ये इंडिया जापान के साथ है हम लोगों, ठीक है? अब लीडर बोर्ड देखते हैं. 10 लोगों ने सही किया, 10 के 10 का नाम ऊपर होना चाहिए. With that, Johanna, you are the first. Not much far behind you, Storm, Bell, Sebastian, Metal, Elsa, Magical Rhino, Muhammad Hassan, Cake, Pingu. Nice Pingu. ठीक है. Hi विजय लक्ष्मी, गुड इवनिंग. आज आप किस नाम से हो विजय लक्ष्मी? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following are India-led initiatives for developing quality infrastructure? First, Asia-Africa Growth Corridor. Second, CDRI, which is Coalition of
coalition for disaster resilient infrastructure. Third, global gateway project. Select the correct answer using the codes given below. 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, and all of them. राइट सो एक बार आप देख लो इनमें से जो तीनों ऑप्शंस है ये कौन से इंडिया लेड इनिशिएटिव्स हैं. ठीक है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, CDRI, ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट. जो आपके ऑप्शंस हैं काफी स्टैंडर्ड ऑप्शंस हैं. 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, ऑल ऑफ देम. राइट, चलो एंटर द क्विज. Select the correct answer using the code given below. 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, all of them. बहुत जल्दी आप लोग ने आंसर दिया है. Lessons change your life ने एक सवाल पूछा है. Sir, provide some tips and organization. I think you are asking about tips on organization, right? If I am not wrong. चलो अभी सबने आंसर दिया तो नहीं है. इसका मैं बताऊंगा. एक बार सब लोग आंसर दे दो. एक आंसर बचा हुआ है यार. एवरीवन हैज वोटेड. लास्ट सेकंड तक आप वेट करते रहे. 1 and 2 only is the correct answer, but surprisingly बहुत लोगों ने से गलत जवाब दिया. मैक्सिमम लोगों ने गलत ही जवाब दिया. 6 3 9 3 12. 8 लोगों ने सही दिया, 12 लोगों ने गलत दिया है. ठीक है, सो ये जो लास्ट वाला प्रोजेक्ट है वो इंडिया लेड नहीं है. बाकी दोनों इंडिया लेड है. CDRI एंड एशिया अफ्रीका जो ग्रोथ कॉरिडोर है ये दोनों इंडिया का. वो एशिया अफ्रीका वाला इंडिया जापान का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड CDRI तो आपको पता है. ठीक है, डिटेल देख लो. Asia Africa Growth Corridor, it is an attempt put forth by India and Japan. Yes, I was right. In 2017, this bilateral partnership intends to foster quality and sustainable social and transport infrastructure development projects and connectivity in Africa. It aims to promote a free and open world order while also providing an alternative to China's increasing investment in and influence in Africa. अब CDRI देख लो. CDRI is an international coalition of countries, UN agencies, multilateral development banks, private sector and academic institutions that aims to promote disaster resilient infrastructure. Its objective is to promote research and knowledge sharing in the fields of infra risk management, standards, financing and recovery mechanisms. It was launched by PM Modi at 2019 UN Climate Action Summit. But ये जो तीसरा वाला है इसके बारे में देख लो, ये यूरोपियन यूनियन का है. ठीक है, ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन. ये इंडिया लेड नहीं है. The project aims to mobilize up to 300 billion euros in investment between 2021 and 2027 to underpin a lasting global recovery. It will support smart investments in quality infrastructure respecting highest social and environmental standards in line with the international norms and standards. It is a European strategy to boost smart, clean and secure links in digital energy and transport as well as strengthen health, education and research system across the world. अगर आप मोटा बात करो, ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट यूरोपियन यूनियन का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है. अगर मैं छोटे मोटे बात करूं. नाउ कमिंग बैक टू लेसन्स चेंज योर लाइफ ने एक सवाल पूछा है. सर प्रोवाइड सम टिप एंड ऑर्गेनाइजेशन. सो आई एम होपिंग ही इज आस्किंग कि सर प्रोवाइड सम टिप्स रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग, दीज आर वेरी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस. ठीक है, आपका यूपीएससी में कभी भी बहुत 3-4 साल पुराना ये वाले सवाल नहीं आते हैं. दीज आर क्वेश्चंस जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं. दे आर कमिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स. सेकेंडली, अगर आप 5 साल पुराने पेपर उठाकर देखेंगे यू विल रियलाइज कि 2020 3-4 साल तक तो लगातार यूपीएससी ने आईआर से कोई सवाल नहीं पूछा था. देयर वाज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम आईआर. ठीक है, बट देन ग्रेजुअली फ्रॉम 2020 दे हैव स्टार्टेड आस्किंग अगेन फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, but they are always linked directly, not even indirectly, directly linked with current affairs. So first of all, your current affairs have to be really good. Second most important thing, this also holds true for your space development. Whatever role India is playing, whatever organization India is part of, whatever coalition India is part of, only those areas are of concern. ठीक है, अब जैसे for example someone might be reading a space program between let's say French or space program or NASA. So that is not for any value for Indian society. ठीक है, until unless it is a very huge program, like they are going to moon or they are going to sun or whatever. ठीक है, they are going to Mars. But otherwise small projects between Japan or France or French or let's say Germany or European Union, these are of no value if they do not have anything related to India or with India. Similarly, for international organizations, first of all you have to make sure that these organizations have India as a very important player. Then only that is very important for UPSC. So first of all, focus on international current affairs. Secondly, focus on only those news items which are equally important for India and in India, right? Then only you will have a sense of it. Thirdly, you have to understand the objectives of those bodies, those organizations which are working in international sphere, be it space development, be it multilateral
organizations like G7, G20 or UN, SCO, BRICS, ASEAN, whatever they are. Okay. And fourth important thing is India's bilateral relations with countries around the world. For example, India and Japan, India and Australia, India and UK, India and France, India and USA, India and Germany, plus India and Middle East. Okay. These are the areas that have a larger cooperation going on a bilateral terms. Okay. It can be defense, it can be science tech, it can be environment, it can be social sector development, it can be connectivity, whatever it is. Okay. So you have to make sure that whatever bilateral development is happening between India and some other country, you have to take care of that as well. Okay. Last most important thing, if there is any award by any multilateral organization like UN or G20 or let's say FAO for any Indian initiative or Indian city or Indian culture, Indian thing, you have to focus on that. So first of all, your priority should be current affairs. Rest everything will fall behind. Okay. You do not have to read everything about Arctic Council or that council or that council if India is not part of that. I'm just giving an example of Arctic Council. Okay. This applies for each and everything. Second most important thing, if it is not applying to India, but it has larger implications around the world, like NATO, then also you have to read it. But if it has a very minor influence, okay, some deal going on between two nations, then of course it is of no value for you. But for example, there is this Abraham Accord, which was done during Trump time. Okay. Now it has a repercussions around the world, not only in Middle East but around the world. So you have to focus on those. Okay. But let's say something between Venezuela and Chile, it is of no value for you. So you have to focus on current affairs first, on those which India is a part of, which India is associated with. Secondly, if it has a larger global implications. So I think I have given you an example. Yes, Nisar is a very good example. Varsha said Nisar is a very good example. Okay, Nisar is between NASA and ISRO. Okay, but something between Chinese space agency and NASA, it is of no value for you. Okay, so understand this thing. And I have seen current affairs magazine filled with these kind of examples, but they have no value. It is just bulking up your whole content. So I have given you enough gyan. Hope you have understood this. Okay. So let's see the leaderboard. Bell will move on the top. Yes. I was right. Bell, Sebastian, Metal. You are moving to first, second, and third. Pingu, very cute name, very good name. Finland joining NATO recently, of course. Abrahamic record. I2U2 grouping is important. ठीक है. I2U2 में क्योंकि इंडिया भी participate करता है. चलो. Recently the Prime Minister of India participated. Very good. बोलते I2U2 आ गया. Very good Varsha. Recently the Prime Minister of India participated in the inaugural virtual summit of I2U2, which is also called West Asian Quad. Which of the following countries form part of the West Asian Quad, which is I2U2? ठीक है. First Saudi Arabia, second Israel, third Qatar, fourth United States of America, fifth United Kingdom, sixth United Arab Emirates, UAE. ठीक है. तो आपके पास 6 ऑप्शंस हैं. एक बार बहुत ध्यान से देख लो इसको. Select the correct answer using the code given below. 1, 3 and 5 only, 2, 4 and 6 only, 2, 3 and 6 only, 1, 4 and 5 only. ठीक है. So I2U2 में इंडिया के अलावा बाकी कौन से मेंबर्स हैं? बेसिक फंडा ये है. Sorry. ठीक है. So recently the Prime Minister of India participated in the inaugural virtual summit of I2U2. Which of the following countries from part of I2U2? ठीक है. चलो आपने ध्यान से देख लिया होगा. प्रतीक कोड दे. Please go to menti.com and use code 39435268 to make sure that you are attending the session live. You can have your name on the leaderboard. All the best. चलो. एक प्लेयर गायब हो गया, नहीं वापस आ गया. चलो ऑल द बेस्ट. I2U2 पर वर्षा ने एकदम सही बोला था. चलो 1, 3 and 5 only, 2, 4 and 6 only, 2, 3 and 6 only, 1, 4 and 5 only. So within 5 seconds we have 18 answers, but we are waiting for these two guys. They are playing with us. It is just like waiting for the Ludo for your turn to get over. Anyway, so yes, I2U2, these kind of things are very important. Everyone has voted. Let's see. चलो ये तो आसान सवाल था. मैक्सिमम लोगों ने सही किया है, बट जिन लोगों ने 1, 3 and 5 किया है, प्लीज आपका आसपास भी नहीं है. ठीक है. वो एक इंसान जो भी है, आई एम नॉट श्योर कौन है,
You have to make sure that you are reading your news very well, because 246 is the correct answer, but 135 is have no linkage at all. Okay, it has literally no linkage with ITU2. Okay, 2, 3 and 6, yes, you got two answers right, one wrong. Okay, but still you guys have to make sure that you are not making this kind of mistake in very important issues like this. Okay, but 17 people more or less they have done good. Okay, ऐसा explanation देख लो. Recently, the first leaders summit of ITU2, which is India, Israel, United Arab Emirates, and United States, was held virtually. ITU2 was first mentioned in October 2021 following the Abraham Accords between Israel and UAE to deal with issues concerning maritime security, infrastructure, and transport in the region. It was established as an international forum to discuss common areas of mutual interest, strengthen economic partnership in trade and investment in respective regions and beyond. The ITU2 referred to as the Western Asian Quad. ITU2 lacks a military angle and focuses on the economy. It has identified 6 areas of cooperation in water, energy, transportation, space, health, and food security. So, ये जो 6 areas of cooperation है, you have to understand them really well. This can be asked in the question directly. ठीक है? So, अब यहाँ पर 17 लोगों ने किया है, तो बहुत लोगों ने सही भी किया होगा, कल 3 लोगों ने गलत किया, बट मुझे उन 3 लोगों से दिक्कत है. ये आसान सवाल आपको मिस आउट नहीं करने चाहिए. So Bharadwaj will remain on the top. ठीक है, Sebastian Metal welcome. ठीक है, but by the way बहुत ही कम gap चल रहा है, so everyone can come back on the top. That's a good thing about today's test so far. So for the 3 questions that we have taken care of, चलो, which of the following activities are prohibited in Antarctica under the Indian Antarctic Act 2022? First, nuclear explosion. Second, disposal of radioactive waste. Third, introduction of sterile soil. Fourth, commercial fishing. Select the correct answer using the code given below. 1 and 2 only, 3 and 4 only, 1, 2 and 3 only, 1, 2 and 4 only. ठीक है, so आप एक बार ध्यान से देख लो कि इनमें से कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो अंटार्कटिका में प्रोहिबिटेड है एंटार्क्टिक एक्ट 2022 के अकॉर्डिंगली. ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट. Select the correct answer using the code given below. 1 and 2 only, 3 and 4 only, 1, 2 and 3 only, 1, 2 and 4 only. चलो बताओ. Pratik Korde has said 1, 2, 3. Let's see. He has said C. Pratik, why don't you join us on the Menti.com? You can just go to Menti.com. It's free of cost. ठीक है, it's totally free of cost. Just see the top of the website. You can see the Menti.com. Use the code 3143526. You can clear it over there. So जिन लोगों ने 1, 2, 3, 1, 2, 4 किया है एकदम गलत है. ठीक है, 1 and 2 only. नॉन स्टेराइल सॉइल वहां पर आप नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हो, स्टेराइल सॉइल आप यूज कर सकते हो वहां पर, ये चीज याद रखना. ठीक है, सो ओनली 6 people have answered it correctly. 1, 2 and 4 and 1, 2 and 3 were not the correct answer. 3 and 4 are allowed. ठीक है, अब आप देख लो इसका एक्सप्लेनेशन. द इंडियन एंटार्क्टिक एक्ट 2022 aims to provide national measures for protecting the Antarctic environment and dependent and associated ecosystem and to give effect to. अब ये याद रख लो, give effect to क्या क्या. First, Antarctic Treaty. Second, Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resource. Third, Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty. ये तीनों को इफेक्ट देने के लिए ये एक्ट लाया गया. ठीक है, सो फर्स्ट Antarctic Treaty, second Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, third Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty. So prohibited activities under the act क्या क्या है? First, nuclear explosion, disposal of radioactive waste, which are 1 and 2, fair enough. Third, introduction of non-sterile soil. हमें sterile soil का ऑप्शन दिया था वहां पर. ठीक है, introduction of specified substances and products. Third, discharge of garbage, plastic or other substances harmful to marine environment in Antarctica. Fourth, damage, destroy or remove any historic site or monument in Antarctica. ठीक है, सो ये है इशू, तो आप इसको ध्यान दो. 1 and 2 ओनली था, 1, 2 and 3 and 1, 2 and 4 ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए हमने रखा था. ठीक है, सो इसके ट्रैप में आपको नहीं फंसना है. चलो लीडर रिपोर्ट देखते हैं. डोंट वरी प्रतीक, यू कैन कंटिन्यू ओवर हियर, दैट्स टोटली फाइन. सो भारद्वाज remains on the top. Arun ji has taken over for the second rank. Sebastian has moved to third. Metal fourth. Mohammad Asam has improved his rank. Well done. 2681. Pingu, क्या सही नाम है पिंगू. पिंगू, आकाश, स्नगल्स, वॉटसन, नेहा, ऑल द बेस्ट.
ठीक है. Consider the following in context of India-Australia trade relations. First, India has a trade surplus with Australia. Second, India's imports from Australia are more than 90% in raw materials and intermediate goods. Third, under the Economic Cooperation and Trade Agreement, ठीक है, ECTA, all Indian goods get access to the Australian market with 2% custom duty in the next 5 years. ठीक है. Which of the statements given above are correct? 2 only, 3 only, 1 and 2 only, 1 and 3 only. So I am giving you 5 seconds. You read it again. Then we move to attempting the answer. ठीक है. एक प्लेयर गायब हो गया यार. चलो, which of the statements given above is are correct? इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड रिलेशंस को लेकर है ये. ठीक है. 2 only, 3 only, 1 and 2 only, 1 and 3 only. तो बताइए जनाब. Last 8 seconds remaining. 7, 6. Everyone has voted. Perfect. Somehow I'm waiting for Pratik's answer. पता नहीं क्यों. Anyway. So yes, statement 1 and 3 are incorrect. 2 only is the correct answer, but everyone has spread out on 5, 4, 4. 5, 4, 9, 4, 13. 13 लोगों ने गलत आंसर दिया, 6 लोगों ने सही आंसर दिया. ठीक है. सो एक बार ध्यान से देख लो इसको. इंडिया का सरप्लस हो ही नहीं सकता ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि हम वहां से कोल मंगाते हैं. कोल जैसी इतनी बड़ी चीज अगर हम मंगा रहे हैं तो हमारा सरप्लस कैसे हो सकता है. ठीक है. इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया अमाउंट टू 17 बिलियन US डॉलर्स, while its export to Australia amount to 10.5. So हमारा करीब $7 बिलियन का ऊपर नीचे है. ठीक है. Hence statement 1 is incorrect. However, what we need to realize is that India's imports from Australia are primarily raw materials and intermediate goods. They are highly considered in coal. 75% of Australia's export to India. समझ में आया? Out of which 71.4% is coking coal. ठीक है, which is used for the steel industry and everything else. On the other hand, India's export to Australia are broad-based and dominated by finished products, consumer goods. India also spent $4 billion approx each year on education of students in Australia. Hence, statement 2 is correct. Now, coming back to the treaty. ठीक है. The agreement will benefit various labor-intensive Indian sectors, but that are currently subjected to 5% import duty by Australia. ठीक है. The agreement will result in immediate market access at zero duty to 98.3% of tariff lines, accounting for 96.4% of India's export to Australia in value terms. The remaining 1.7% lines are to be made zero duty lines over 5 years. समझ में आया? 100% के लिए नहीं है, केवल 1.7% के लिए है. Overall, Australia is offering duty elimination on 100% of its tariff lines. Hence, statement 3 is incorrect. ये आप याद रख लो कि ये जो दोनों एग्रीमेंट है ना, एक यूके के साथ, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूके वाला ब्रेक्सिट के बाद हो रहा है एंड ये वाला हम रीनिगोशिएट कर रहे हैं. ठीक है. और एक तीसरा बहुत साल से चल रहा है, यूरोपियन यूनियन से चल रहा है. ठीक है. तो ये सब हमको बहुत जानना बहुत जरूरी होता है. ये प्री और मेंस दोनों में बहुत काम आएगा. लेट्स सी कौन कहां पहुंचा. सेबेस्टियन विल कम ऑन सेकंड. Yes, Sebastian will come on second. Nice. Which of the following dam hydroelectric projects is located on the eastern river as per Indus Water treaties? ठीक है. Pando Dam project, Rattle hydroelectric project, Shahpur Kandi Dam, or which multi-purpose project? ठीक है. Select the correct answer using the code given below. 1 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 3 and 4 only, and all of them. ठीक है. तो हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके हिसाब से जो हमारा इंडस जो ईस्टर्न रिवर वाला जो पैक्ट है, ठीक है, जो ईस्टर्न रिवर से हमारे पास है, उनमें कौन से प्रोजेक्ट सिचुएटेड हैं? ये पांदो डैम प्रोजेक्ट, राटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, शाहपुर कंदी डैम प्रोजेक्ट और उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. ठीक है. 1 and 3 ओनली, 2, 4 ओनली, 1, 3 and 4 ओनली, ऑल ऑफ देम. चलो, ऑल द बेस्ट. ये 21 होते होते कहां पीछे चला गया? Select the correct answer using the code given below. ये फैक्चुअल है, इसमें बहुत कंसेप्चुअल नहीं है. ठीक है. ये आपका रिवीजन गैप शो करेगा और आपका गलत होता है. तो 1 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 3 and 4 only, all of them. जो भी मुझसे Z5 का कोड मांगने की कोशिश कर रहा है, प्लीज सेशन का वेट खत्म कर ले. जो भी ये देख रहा है, अगर मेरा यार मित्र दोस्त परिवार का है तो प्लीज
माफ कर दे, अभी मैं लाइव सेशन पर हूँ, मैं आपको जी फाइव कोड नहीं दे सकता हूँ। चलो मैक्स हम लोगों ने गलत जवाब दिया है, द करेक्ट आंसर 1, 3 and 4 ओनली। ठीक है, और देख लो ये सब कहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल में चले जाओ, क्योंकि इंडिया ने इस साल बोला है हम इंडस ट्रीटी को वापस से रिवाइज करना चाहते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये बहुत ही रेयर ओकेजन है कि जो इतने साल तक चला आया है इंडिया पाकिस्तान के बीच में सक्सेसफुली, दोनों देशों के बीच में कोई ट्रीटी सक्सेसफुल चली है और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनी है, वो इंडस वाटर ट्रीटी है। ठीक है, so Indian Water Treaty was signed in 1960 after 9 years of negotiation between India and Pakistan with the help of World Bank, which is also a signatory. The treaty allocates the western rivers, which are what IJC. ठीक है, आप ये रख लेगा ICJ, जो हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सॉरी ICJ उनके पास है, हमारे पास RBS है। ठीक है, and eastern rivers Ravi, Beas, Satluj to India. At the same time, the treaty allows each country certain uses on the rivers allocated to the other. ऐसा नहीं कि इंडिया इंडस झेलम में चनाब पे कुछ कर नहीं सकता है, या फिर पाकिस्तान रावी ब्यास और सतलज पे कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सर्टेन चीजें अलाउड है। टू यूटिलाइज द वाटर्स ऑफ द ईस्टर्न रिवर्स व्हिच हैव बीन एलोकेटेड टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव यूज, इंडिया हैज कंस्ट्रक्टेड डैम्स सच एज भाखड़ा डैम ऑन सतलज, पोंग एंड पांदो डैम ऑन ब्यास, एंड थेन व्हिच इज रणजी सागर ऑन रावी। ठीक है, अदर वर्क्स लाइक ब्यास सतलज लिंक, मधोपुर ब्यास लिंक, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट एक्सेट्रा हैज हेल्प्ड इंडिया यूटिलाइज नियरली एंटायर 95% of waters of eastern rivers, but there are certain sections, there are certain areas जहां पर अभी हमारा पूरा का पूरा ईस्टर्न वाटर्स को नहीं, ईस्टर्न रिवर्स को हम पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। इंडिया अब उसको देखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये देखना, however about 2 million acre feet of water annually from Ravi is reportedly to be still flowing unutilized to Pakistan below Madhopur. To stop the flow of these water that belong to India for its utilization, India following steps have been taken. First, Shahpur Kandi project. This project will help in utilizing the waters coming out from powerhouse of Thain Dam for irrigation and power generation in JNK and Punjab. The construction works is being undertaken by Government of Punjab under monitoring of Government of India. Second, construction of Uj multi-purpose project. This project will create a storage of water on river Uj, a tributary of Ravi, for irrigation and power generation in India. This project is a national project, याद रखिएगा, whose completion period will be 6 years from beginning of the implementation. Hi Suraj, you will get the PDF from the Telegram channel of Civil Jeri. We will post it tomorrow. Don't worry. ठीक है, after every day session we post the PDF tomorrow. Also we give you micro notes on these issues, these areas on our website civilzeri.com. You can go there, you can access them. Also apart from these 10 questions, you can attempt extra 10 questions on Civil Jeri website. Every day we are doing this from Monday to Friday. ठीक है, चलो रीडर बोर्ड देखते हैं। बहुत कम लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। वर्षा, Elsa, Sujita, in the list of all these 10 people, of course we have 22 players playing, but दिखाता है कि 10 ही लोगों को है। ठीक है, सो वर्षा, वेलकम बैक ऑन द टॉप। ठीक है, भारद्वाज, आपकी लीड अच्छी थी कि in spite of having not under 2 questions, still you are on the second rank. ठीक है, so not much is separating all the top 5 players, 3945, 3919, 3874, 3873, 3862. So everyone can move up and down. Don't worry. ठीक है, चलो, in order to protect the rights of citizens, India has ratified which of the following international treaties, conventions. ये भी याद रखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि ट्रीटीज कन्वेंशन इंडिया ने साइन किए हैं कि नहीं किए, रेटिफाई किए हैं कि नहीं किए हैं, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, बहुत सी ट्रीटी इंडिया साइन करता है, रेटिफाई नहीं करता है, सो ये देखना बहुत जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, बी सेकंड कन्वेंशन ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स, 3 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Still the correct answer is in the code given below. A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D all of them. चलो, all the best. प्रतीक कोड दे, congratulations. चलो, select the correct answer using the code given below. एक बार फिर से देख लो। 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, and all of them. Last 5, 4, 3, 2, 1. प्रतीक कोड दे, you are correct. ठीक है, 1 only is the correct answer. 2 and 3, 1 and 3, and all of them are incorrect.
ठीक है। सो 5 4 9 9 3 12, 12 लोगों ने गलत जवाब दिया, 6 लोगों ने सही जवाब दिया, ठीक है, यानी 18 लोगों ने अटेंड किया था। सो ओनली द फर्स्ट ट्रीटी हैज बीन ratified by India. The UN Convention Against Corruption, which entered into force in December 2005, is the first ever binding global anti-corruption instrument. याद रखिएगा, first ever binding global anti-corruption instrument. It obliges the states to prevent and criminalize different corrupt practices, promote international cooperation, cooperate for the recovery of stolen assets, and enhance technical assistance and information exchange. ठीक है, so this is the correct, but बाकी 2 और 3 नहीं है, हमने इंडिया रेटिफाई नहीं कर रखा है, देख लो क्यों। Domestic Workers Convention was adopted by the International Labour Organization concerning decent work for domestic workers. It lays down basic rights and principles and requires states to take a series of measures with a view to making decent work a reality for domestic workers. India had not ratified the 2011 Domestic Worker Conventions and 2014 Forced Labour Protocol. ठीक है, तो इंडिया ने अब तक इसको रेटिफाई नहीं कर रखा है। तीसरा जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्संस फ्रॉम इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस is an international human rights instrument of the United Nations intended to prevent forced disappearance, which as defined in international law is part of crimes against humanity. The text was adopted by the UN General Assembly on 20th December 2006 and opened for signature on 6th February 2007. It entered into force on 23rd December 2010. India has signed but not ratified this convention. ये याद रखिए, ठीक है, इंडिया ने इसको साइन कर रखा है बट रेटिफाई नहीं कर रखा है। तो ये जो माइनर डिटेल्स है ना इंपॉर्टेंट ट्रीटीज की, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया ने साइन रेटिफाई किया है, केवल साइन ही नहीं किया है, या साइन रेटिफाई दोनों कर रखा है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। भारद्वाज विल अगेन मूव बैक टू टॉप एंड सीआर विल कम बैक ऑन द सेकंड। सॉरी, सॉरी, भारद्वाज वेल डन, सीआर वेल डन, मेटल वेल डन, ठीक है, सॉरी। चलो 8th क्वेश्चन देखते हैं। 21 प्लेयर्स रेडी हैं, और लाओ यार अपने दोस्तों भाइयों को नहीं बताओ, मजाक कर रहा हूं। इंडिया हैज साइंड द एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल प्रोविजंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? यूएसए, फ्रांस, जापान, रशिया। बताइए। इंडिया हैज साइंड द एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज with which of the following countries? First, United States of America, B, France, C, Japan, D, Russia. Five, 4, 3, 2, 1, खत्म। जापान इज द करेक्ट आंसर, यूएसए इज नॉट द वन। ठीक है, ध्यान से देखो, एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज, ये आपका वाली टीटी नहीं जो आप सोच रहे हो यूएसए के साथ, इट इज डिफरेंट। एवरी टीटी हैज इट्स ओन लैंग्वेज। दिस एग्रीमेंट इज बिटवीन इंडिया जापान एंड इट्स कॉल्स अपॉन एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि ये वाली नहीं है, उसको हम लोग कॉम कैसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबरिंग द नेम, वाली टीटी नहीं है। तो बहुत लोगों ने यूएसए से कंफ्यूज किया है, इसके बारे में पढ़ लो। इंडिया एंड जापान साइंड एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज कंसर्निंग रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज and services between the armed forces of India and the self-defense forces of Japan. This agreement establishes the enabling framework for closer cooperation between the armed forces of India and Japan in reciprocal provisions of supplies and services while engaged in bilateral training activities, UN peacekeeping operations, humanitarian international relief, and other mutually agreed activities. ठीक है, the agreement will also enhance the interoperability between the armed forces of India and Japan, thereby further increasing the bilateral defense engagements under the special strategic and global partnership between the two countries. ठीक है, यस प्रतीक, जापान इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो बहुत लोगों ने इसको कॉमकास्ट और बाकी जो ट्रीटी है उनसे कंफ्यूज करके यूएसए मार्क कर दिया, नहीं, इंडिया एंड जापान इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेटल विल मूव ऑन द टॉप, व्हाट? Yes, metal will move on the top. Now metal has a good lead. Okay. Now we are moving on the back end of the test. ठीक है, so last 2 questions remaining if I am not wrong. ठीक है, 2 ही सवाल तो बचे हुए हैं if I am not wrong. Yes, 9th and 10th.
International Union of Geological Sciences has recognized which of the following as India's first geo-heritage site? A. Sandra Granite of Rajasthan. B. Lunar Lake of Maharashtra. C. National Fossil Wood Park of Tamil Nadu. D. Mamlu Caves of Meghalaya. ठीक है. So International Union of Geological Sciences, it's a premier scientific body under UN, has recognized which of the following as India's first geo-heritage site? Sandra Granite of Rajasthan, Lunar Lake of Maharashtra, नेशनल फॉसिल वुड पार्क ऑफ तमिलनाडु, या फिर डी मामलू केव्स ऑफ मेघालय. बताइए. ये जो IUGS है ये इंटरनेशनल वो है, ठीक है, इंटरनेशनल और सबसे बड़ी प्रीमियम बॉडी है यूएन की साइंटिफिक बॉडी, ठीक है. अभी आप उस बारे में पढ़ोगे. द करेक्ट आंसर इज मामलू केव्स, ठीक है. लोनार लेक और नेशनल फॉसिल वुड्स या फिर सेंड्रा ग्रेनाइट ये सब नहीं है, ठीक है. अब इसके बारे में पढ़ लो. The International Union of Geological Sciences, one of the largest scientific organizations of UNESCO, has recognized the Mamlu Cave located in the East Khasi Hills district of Meghalaya as one of the first 100 IUGS geological heritage sites. I have visited that place. ठीक है, it's a very beautiful place and it is one of the biggest caves in Asia. ठीक है, with a length of 7.2 kilometers, Mamlu Cave is the fourth longest cave in the Indian subcontinent. ठीक है, and Asia में one of the biggest है. ठीक है, of course जो आपका जो लाइन केव्स है इस साइड वाले क्या कहते हैं उसको, इंडोनेशिया और फिलीपींस ये सब वाले, वियतनाम में भी हैं, ठीक है. दीज आर बिगर देन इंडियाज, ठीक है. बट इंडिया में ये आपके नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में है, नीचे आपका अंडमान निकोबार में भी अच्छे खासे हैं, ठीक है. द केव इज अ लॉन्ग मेज विद मेनी ओपनिंग्स एंड डेकोरेटेड विद स्टैलाक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स, कॉलम्स, ठीक है, ड्रेप्स एंड मून मिल्क, ठीक है. आप यहाँ पर कभी भी जाओगे, यहाँ पर हमेशा ह्यूमिडिटी रहती है एंड ये बेसिकली जो आपका सी एरिया था ना उसको कवरेज करके बना है. सो मामलू केव्स इज सिचुएटेड ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय. आई हैव बीन देयर. समडे आई विल पोस्ट पिक्चर्स ऑफ इट एज वेल, डोंट वरी, ठीक है. कमिंग बैक टू लीडर बोर्ड, मेटल विल रिमेन ऑन द टॉप, सुजीता विल कम ऑन द सेकंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, सुजीता विल कम ऑन द टॉप. मोहम्मद हसन, वेरी गुड, यू हैव डन अ ग्रेट रिकवरी, वेल डन. No, Pratik, Lunar Lake is not correct, as you know why. ठीक है, चलो last question guys, all the best. Then we move to tomorrow. Arrange the following disputed territories between India and Nepal in west to east manner. Lipulekh, Kalapani, Limpiyadhura. ठीक है, 1 2 3 3 2 1 2 1 3 3 1 2. बहुत ध्यान से देखो, इसलिए मैंने इसको टाइम बढ़ा रखा है, आप आराम से देखो. Arrange the following disputed territories between India and Nepal in west to east manner. ठीक है, Lipulekh, Kalapani, Limpiyadhura. 1 2 3 3 2 1 2 1 3 3 1 2. बताओ. Lipulekh, Kalapani, Limpiyadhura. Sorry, 3 2 1 is the correct answer. आप ऐसे मूव करोगे अगर वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है. अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जाओगे तो आपका सबसे पहले लिम्पियाधुरा पड़ेगा, ठीक है. कालापानी बीच में है, लिपुलेख एकदम ईस्ट में है, ठीक है. ऐसा मैक्सिमम लोगों ने इसको गलत जवाब दिया है. थैंक्स अ लॉट प्रतीक. चलो, लिम्पियाधुरु जो इसको बोल लो इज वेस्टर्न मोस्ट डिस्प्यूटेड टेरिटरी एंड लिपुलेख इज ईस्टर्न मोस्ट डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. कालापानी इज लाइज इन बिटवीन द टू, ठीक है. ये बहुत ही बेसिक एक्सप्लेनेशन है. एंड नाउ कमिंग बैक टू द लीडर बोर्ड, क्या लगता है आखिरी में कौन पेपर करके आएगा, क्योंकि आखिरी में कल 3 या 4 लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है. सो लेट्स सी. हैज मेटल, यस, मेटल विल कम ऑन द टॉप. And Sujita Bharadwaj CR will remain on their respective position, but there will be a change in 10th and 9th position between Snuggles and Carl Gustav. Metal, congratulations. Can you please type your name? Nidhi is saying, sir, voice is not coming. Can you hear me? Sujita Bharadwaj. Yes, the voice is coming. Sorry, it might be some issue on your own end. ठीक है, you can reconnect it. So, Metal, can you please type your actual name in the chat box? Pratik, sorry, wrong answer. ठीक है, 3 2 1 was the correct answer. So I'm waiting for Metal to type their name in the leaderboard so that I can call out the actual name. ठीक है,
Varsha has been a good sport. ठीक है. Veroni George, I am metal. Veroni George, well done. ठीक है. I'll be taking your name on the community section of YouTube tomorrow, plus on the Telegram channel of Civil Theory. Your name will go on the top. This screenshot always goes on the top every day to inspire your effort, to inspire your confidence, and to make sure that you are on the right track before 2023 prelims. These 30-45 minutes with us will help you improve your overall exam preparation. Plus, whatever questions we are taking up over here, they have a huge value in the examination, and hopefully if they come in the examination, you will not be fearing of them and you will be taking care of them in a very good manner. Okay, with that I take your leave, guys. Okay, Pratik Kote has said tomorrow I'll also join on Menti. It is fun and informative. Thanks a lot, yeah. Thanks a lot, Pratik, for the great words. Okay, so Varsha, you have done really good. Veroni, all the best for tomorrow. See you tomorrow, Varsha. Okay, and with that I take your leave, guys. Take care. All the best. Bye bye. Good night.